Hi guys, am I audible to you? Can anyone just confirm whether I'm audible or not? In the chat box, please let me know I'm clearly audible. Okay, great. Thank you so much for confirming that I'm audible to you. A very warm good evening on behalf of whole LeDroit India. So welcome to today's session where we are going to discuss legal career after law as well as how to apply for jobs and internships. Okay. So meanwhile, others are joining. Do let me know what issues you are facing because for this particular session our objective was to help you out. Definitely you are facing some issue with your career, whether you are not able to understand which career opportunity is good for you, or whether you are applying for internships but not receiving any responses. So do let me know in the chat box like what issue you're facing currently, and then we will move ahead with the session. Okay, also let me know like you're currently in which year, what you're doing. I'm looking forward to your replies. We'll start the session at 5:05. Meanwhile, do let me know about like from where you are joining, what you're doing currently, okay? And also like what's the reason that you have joined the session? Whether you are stuck with your legal career opportunities, not able to decide over there, or whether you are applying for jobs and internships but not receiving any response from there. So do let me know your issues right now because this session is for you. We are over here to discuss and provide you solutions. Okay, so feel free to comment about your query or anything with regard to legal career in the chat box. We'll look into the same. Okay, Hitashi is saying need a job but don't know where to apply, want in corporate firm. Hitashi, also let me know like what you have done, whether you have graduated from college already, whether you are in law college currently, what you are doing. So give me a brief about yourself and then let me know what's the reason you have joined the session. Okay, so you have graduated. Great. So others as well, please let me know what you are doing currently and also like why you have joined the session. What's your pain area right now? Okay. Unable to find good offline internships. Okay. Okay. All right. Great. So let's start with me first. I'll give my quick introduction to you, okay? And then we will understand like how you can prepare your career. So this particular session is divided into two parts. In first part, we are going to understand various career opportunities for a lawyer. In second part, we are going to understand how to actually apply for these opportunities so that you can get reply from the employers, okay? Okay. So so I'll be needing your assistance in this as well. I need to know like what are your pain areas so I can clarify all your doubts during this session. Okay. Shruti Singh, she recently completed law graduation and now stuck where to apply and how. Okay. Another thing, do let me know what's your location. Like, are you guys open to location or you are looking out for opportunities in one particular location or what? What's the scenario? Okay. Mumbai. Okay, great. Who do we have? Who else do we have over here? Okay, great. All right. So, people who have joined recently, we are trying to know each other. So, let me know like what's your pain area, what's the issue you are facing, and whether you are stuck with your career opportunities or whether like applying for opportunities and not receiving any response from anywhere. That's the reason you have joined this session. Okay, just give me a minute. 1 second, please.
Okay, great. Thank you. So, I can see that many of you are open to locations and all. All right, then let's just get started. Hi, everyone. Very good evening once again. My name is Ria Chavra. I'm founder of LeDroit India, and I'm also a corporate lawyer. I have got 5+ years of experience. I've worked with multiple companies such as ISG, Infosys, Bright Knight, and iCertis. So, with that experience, I'm over here guiding you all. And the best part about all these opportunities, what was, you know what? I never applied for any of them. I never applied for any of these opportunities. Still, I got a call directly from the employer. How's that possible? I didn't apply for it. I still received a call from the employer, and I got the job. So I'll just talk about like how I started my career. I know that many of you are confused right now. If you're currently in law college, you might be confused like which is the best career opportunity, how you can create your career in corporate, and what to do. So what's the best career path, how you can go ahead with it. I hope my language is easy. Like if you want me to explain in Hindi, I'm fine with it as well. Is it like good for everyone? Should I explain things in Hindi as well? Yes, no? So I want this session to be very much interactive. So please stay active on the chat box. Let me know. Okay. All right. Great. So I'll continue with English. Okay. Some of you want me to talk in Hindi. Great. So okay. I uh, it's kind of confusing, you know, when I have to use both the languages. Okay, let's get it started once again. So when I was in law college, जब मैं law college में थी, and it was very much difficult for me to select the right career path. I was the first person in my whole family to opt for law, so there was no one else to guide me. I think so many of you must be having this issue as well. आप मे बी काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि कोई है ही नहीं गाइड करने के लिए जो आपको गाइड कर सके. बिकॉज जब आप लॉ स्कूल एंटर करते हो, यू विल रियलाइज दैट मेनी पीपल आर देयर हु हैव like parents who are already a lawyer or a judge. They have legal background, but when you join from a completely non legal background and choose law as your career, you're completely clueless. कोई है ही नहीं गाइड करने के लिए कि क्या कैसे करे. और इसमें अगर आपको कॉर्पोरेट पे जाना होता है तो यू विल कम अक्रॉस थिंग्स लाइक देयर इज नो वन टू गाइड. कॉर्पोरेट में कैसे जाएंगे, कई लोगों का रेफरेंसेस से हो जाता है. मेनी पीपल गेट द जॉब विद रेफरेंसेस. और हाउ टू गेट इनटू कॉर्पोरेट, डायरेक्टली जॉब कैसे मिलेगी. सो दूसरा डिलेमा लोगों का ये रहता है कि एक ना हवा रहती है आपकी लॉ कॉलेज में कि एनएलयू काफी लोग होते हैं. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फॉर एनी कॉलेज, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर इज अ myth in all the colleges, mainly non-NLU colleges, कि if you're not from NLU or top law college background, in that scenario आपको problem face होगी legal career create करने में. Because कई बार जब आप opportunities के लिए apply भी करते हो ना, you'll come across that they demand students who have passed out from NLU or Symbiosis or any other top college, Jindal and all. Okay, now people majorly find this thing as a struggle, like how can I do this. So what they do, they go for LLM. They try to get into good colleges for LLM, right? But I'm telling you the reality, colleges doesn't matter. It doesn't matter. अगर आप में हार्ड वर्क करने की विल है, एंड इफ यू हैव द स्किल्स, देन एनी कंपनी विल हायर यू. आप जब कोर्ट पे बोल रहे होते हो, जज आपको थोड़ी ना पूछेगा आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट किए हो. विल ही आस्क? नो, ही वुडंट आस्क यू कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट किए हो. ही इज गोइंग टू चेक योर ड्राफ्टिंग, ही इज गोइंग टू सी हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट. सो इस बेसिस पे ही इज गोइंग टू आंसर टू योर लाइक आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो खुद को कोर्ट पे. दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू जज यू. नाउ आपका लॉ कॉलेज कहीं काम नहीं आता है, आपकी स्किल्स काम आती है. आप काबिल हो या नहीं ये काम आएगा. सो व्हाट मैटर्स एक्चुअली इज योर स्किल्स, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, not your college, not your degree, not even your marks. Whatever marks you have got in your college, that also doesn't matter after a time. आप जब कंपनी ऑलरेडी ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट कंपनी पे स्विच करते हो, they are not going to ask you how much you scored in your law college, whether you were a top student or what you were doing. They are not going to ask you that.
what they are going to focus on, they are going to focus on your skills. आप उस काबिल हो या नहीं, आप काम कर सकोगे या नहीं. So ultimately आप NLU से हो या non NLU से हो, what matters over here is आप काबिल हो, do you have the qualifications, do you have the correct skills to do the work or not. Okay, so that's what matters over here. And how you'll be able to prepare your skills? If you have clarity, if you have clarity on your mind, like which career path you want to go ahead with, if you are aware of it, then only you'll be able to go ahead with that career, right? So agar aap abhi law college mein ho, let's say first year, second year, this is the correct time for you to start working on your career. Instead of what many people do, they apply for internships. यहाँ apply कर दो, वहाँ apply कर दो. They simply keep on applying for internships everywhere. And when you open their resume, you will come across 60 internships. So do you think any person will consider that this person has done 60 internships? So he might be having good qualifications. You know what impression that will create? कि आपने हर जगह अप्लाई किया, you were not serious about any opportunity. So don't do that. That's another tip. Don't do that. कहीं पे भी अप्लाई मत करिए. इंटर्नशिप वहीं अप्लाई करिए जहाँ पे where you can actually learn, where you are actually willing to learn. So let's say if your career motive is to go ahead with corporate and you are applying for internships opportunities that are going to provide you litigation experience. अगर आपको कॉर्पोरेट में करियर बनाना है एंड आप लिटिगेशन की इंटर्नशिप पे अप्लाई कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस आपका काम आएगा? No, that experience won't count when you actually start applying for opportunities. So be very clear what you want to go ahead with and then start applying. Okay, so what we are going to do now, we are going to understand about legal career opportunities after law. Okay, then we are going to understand how to apply for these opportunities. Okay, great. Can I have your like any reactions on this if we are clear with how we are going ahead with it? So I want you all to drop your questions and queries in the chat box. Be very much interactive. Okay. All right. So I'll be just sharing my screen now so we can start ahead with it. Do let me know whatever query you have. People who have joined recently, let me know what's your pain area, why you have joined this session, whether you are applying for opportunities and not receiving response, or what's the scenario. Okay. All right. So now we'll start ahead with how to get a job in corporate law. Basically, दो fields है, right? Litigation or corporate. When it comes to job, I'm not counting your government jobs, judiciary, and other opportunities. Okay, we have just divided it into corporate and litigation, two basic areas. How you have to create your career in this particular scenario. So we'll start with a roadmap. So first is like career prospects in corporate law. Now, when we think of corporate, many of you will be of the impression that corporate means working in the company. That's all. Corporate means working in the company. So there's nothing else. But in the company as well, क्या काम करना पड़ता है? What type of opportunity you will be getting? What type of work you will be getting, आपकी qualifications क्या होनी चाहिए, skills क्या demanded होती है, that also matters, right? So in corporate itself it's a very vast range. Same for your litigation. जब हम litigation बोलते हैं, what comes into our mind कि court पे practice करना, that is litigation, correct? But ओके, सो कोर्ट में प्रैक्टिस करना, दैट इज लिटिगेशन. बट लिटिगेशन में भी काफी चीजें होती है, फील्ड डिफर कर जाती है, अलग अलग फील्ड्स हो जाती है लिटिगेशन में भी. सो ये बेसिकली वी हैव डिवाइडेड कॉर्पोरेट एंड लिटिगेशन. बट आप एक्चुअली जब वर्क करना स्टार्ट करोगे ना, दैट टाइम यू विल रियलाइज कि हर फील्ड सब डिवाइडेड है, हर फील्ड में आपको अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. नाउ दिस स्पेशलाइजेशन, आई डोंट मीन दैट आपको LLM करके स्पेशलाइजेशन मिलेगी. आई डोंट मीन दैट. स्पेशलाइजेशन इन द सेंस आपकी स्किल्स स्पेशलाइज्ड है या नहीं उस स्किल पर्टिकुलर एरिया पे. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिसाइड. नेक्स्ट इज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड. जैसा कि मैंने बोला कि हर फील्ड डिवाइडेड है, एवरी फील्ड इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट? सो हर फील्ड के लिए आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सको.
Okay. Next is your host experience. That's me. So, as I mentioned, that I have got 5+ years of experience in corporate, and I have applied I have never applied for these opportunities. Always, I received the call from the employer, and how I received that call, I'm going to share those tricks with you during this session. So, stay there till the end, so you can also directly get the call from employer. I know कि काफी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, यू गेट डिप्रेस्ड एज वेल, स्पेशली जब आप कॉलेज ग्रेजुएट कर चुके हो और आप कंटिन्यूअसली अप्लाई कर रहे हो एंड यू आर नॉट रिसीविंग एनी रिस्पॉन्स. बट how maybe you are doing something wrong. Maybe we with this session you can get a clarity about it कि आप क्या गलत कर रहे हो और कैसे सही करोगे, तो you will actually receive a call from the employer. Okay, so we'll understand all these things. Okay, बट आई बी नीडिंग योर सपोर्ट इन दिस. आप चैट बॉक्स पे मुझे अपने क्वेश्चन दे जाइए. We'll be taking a proper pause and will answer all your queries. Okay, so over here we have gathered to resolve your queries, so feel free to drop all your questions and everything. Okay. Now, different ways to apply for jobs. That is also what we are going to understand. And CV preparation, as in आपका CV कैसा दिखना चाहिए, आपको CV को कैसे बनाना चाहिए, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे. And what are the other skills that you need to work upon? Okay, so we are clear with what are the things we are going to discuss in this particular webinar. It's going to be there till 6:30. Okay, if you want, you can carry your notebook and pen to make the notes. Of course video will be there, but आप अच्छे से learn कर रहे होते हो चीजें जब आप pointers लिख लेते हो, right? So during the session कई बातें ऐसी होगी which you would like to point it out. Okay, all right. So let's start with different career prospects. So basically we divided into two parts, corporate and litigation. Now let's understand कि किस फील्ड में क्या स्किल्स काम आएगी और आप अपना करियर कैसे बना सकते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में. हाउ यू कैन क्रिएट योर करियर इन पर्टिकुलर फील्ड. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉर्पोरेट और लिटिगेशन, अब हम इसे साइड करके सेक्टर्स अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं. कौन आपको जॉब दे सकता है लॉ से, लॉ इंडस्ट्री में? लॉ फर्म्स स्पेशली आपको जॉब्स दे सकते हैं, राइट? लॉ फर्म्स आर विल प्रोवाइड यू जॉब्स. नेक्स्ट इज इन हाउस काउंसिल, दैट इज बेसिकली योर कंपनीज. कंपनीज भी आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है. देन आप इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हो. दीज आर द थ्री मेजर एरियाज. एक आपको लॉ फर्म में जॉब मिल जाएगी, दूसरा आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो एज अ प्रैक्टिशनर और अ फ्रीलांसर. थर्ड, यू कैन गेट अ जॉब इन कंपनी. करेक्ट? दीज आर द थ्री वेज ऑफ अर्निंग. अब हम लोग जानते हैं कि कैसे जॉब मिलती है, क्या होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद लॉ फर्म एंड एलपीओ. ये दोनों अलग अलग है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद फर्स्ट लॉ फर्म. लॉ फर्म क्या होता है? लॉ फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स जो एक साथ मिलके लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो हर लॉ फर्म की स्पेशलिटी अलग होती है. आप एक लॉ फर्म में कोई भी लॉ फर्म पे अप्रोच करके नहीं बोल सकते हो कि ये काम कर दो, वो काम कर दो. लॉ फर्म्स एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स होते हैं जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सो मेनी फेमस लॉ फर्म्स. डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके, राइट, डू लेट मी नो विच लॉ फर्म यू हैव हर्ड ऑफ. अब हर लॉ फर्म की स्पेशलाइजेशन होती है जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. कोई एक लॉ फर्म होगा दैट स्पेशलाइजेस इन योर फैमिली लॉ मैटर्स, डिवोर्स केसेस, marriage and all. Another law firm will be having specialty in with regard to your civil matters or real estate matters, property dispute matters. Correct? So similarly, another law firm will be having specialty of your criminal matters like bail provide karna and all. So same will happen in your corporate as well. Corporate law firms भी होते हैं जिनकी specialty होती है corporate matters को handle करना. अब जरूरी नहीं है कि लोगों के बीच में ही झगड़ा होता है. कंपनीज के बीच में भी झगड़ा होते हैं, कंपनीज के बीच में भी केसेस होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी केसेस that happens between the companies. That's how you come across several consumer complaints, right? Then you also come across fights between two companies, that this company has filed a case against the other. So what are these things? खाली कंपनी में काम करने के लिए लॉयर नहीं होते हैं, कंपनी के केसेस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए लॉयर्स होते हैं. You will here must have come across cases जहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया गया by a customer. So मेनली कंज्यूमर कंप्लेंट्स जब फाइल होती है, कस्टमर ही तो फाइल करते हैं कंपनी के नाम पे, राइट? सो इस मैटर को कौन डील करेगा?
Or what if company has done any fraud, any financial fraud हुआ है company के अंदर, then who is going to handle that matter? So with your matters related to company litigation or corporate litigation, that is also handled by law firms. So this way your law firms are divided into again several specializations. You have to select which area you want to go ahead with. अगर आपको family law के matters में interest है, so you will focus on your skills in family law, divorce cases and all. You will do internship in that area and all. Okay, so what we are going to do, हम लोग जैसे जैसे understand करेंगे ना different career prospects, what you have to do once it is finalized, once you have gotten a clear picture that you want to go ahead with this career, जब आपको clear picture मिल जाए कि आपको इस career के साथ जाना है, तो you have to start applying for internships if you are still in law college. Okay, next you have to add on certifications. Certifications matter, they matter. Reason is आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है that just your college degree won't be sufficient. आपकी कॉलेज डिग्री सफिशिएंट नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए. अगर फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, ओके, दो लोगों ने अप्लाई किया है एक अपॉर्चुनिटी के लिए. अब उस अपॉर्चुनिटी में एक ने कॉलेज टॉप किया है, ही हैज टॉप दिस कॉलेज, he has got great scores and everything and he is applying for the opportunity. On the other hand, एक और इंसान है जिसने अप्लाई किया है but he has got internship experience, उसकी communication skills अच्छी है and that person has is also aware of drafting, उसे drafting भी आती है. Now as an employer, keep yourself as a in employer's position. किसको आप हायर करोगे? You will go ahead with the second option. Reason is you will see कि इस इंसान को experience है, this person has got the skills, he has done more than college, he has done internships as well, he has also done several certification, so he is more knowledgeable, he has got knowledge of practical world, right? So you will be going ahead with the second person even if the first person has topped his college. So what happens over here, यहाँ पे आपकी कॉलेज डिग्री काम नहीं आ रही है, आपकी स्किल्स काम आ रही है, आप कितने एक्टिव हो वो देखा जा रहा है, आपको आता है नहीं आता वो चीजें देखी जाएगी, राइट? सो आप क्या करोगे? फर्स्ट इज इफ यू आर इन कॉलेज यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स. अगर आप ऑलरेडी कॉलेज ग्रेजुएट कर चुके हो एंड अभी अप्लाई कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज के लिए, then look for do you have the skills or not. आपके पास करेक्ट स्किल्स है या नहीं है, एंड अगर स्किल्स है तो आप सही तरीके से अपने स्किल सेट्स को शो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज एरियाज. ओके, नाउ लेट्स वी अंडरस्टूड दैट लॉ फर्म्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती है हर लॉ फर्म की. वन स्पेशलाइजेस इन सिविल, अदर इन कॉर्पोरेट. सेम फॉर योर दिस थिंग, कॉर्पोरेट में भी लॉ फर्म्स की डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है. एक लॉ फर्म विल बी हैविंग स्पेशलिटी इन डीलिंग विद कंपनी लॉ मैटर्स, another will be having specialty in dealing with consumer forum and all, right? So similarly हर लॉ फर्म की डिफरेंट स्पेशलिटी होती है एंड आपको जहाँ पे करियर बनाना है accordingly you will be working on your skills. Next is your LPO. So this is LPO, not sure आप सुने हो नहीं सुने हो. इफ यू आर वेरी न्यू देन एलपीओ का फुल फॉर्म है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ओके, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. अब ये क्या करते हैं, हमने अब तक लॉ फर्म जाना कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट एलपीओ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं थोड़े. व्हाट दे डू, आउटसोर्सिंग से हम समझते हैं आउटसोर्सिंग क्या होता है. जब मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होगा, व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई विल ट्राई कि मेरा काम कोई और कर दे एंड आई विल पे हिम फॉर दैट. करेक्ट, दैट्स द रीजनेबल वे टू गो अहेड विथ, राइट? सो सेम हैपेंस विथ योर लॉ फर्म्स एज वेल एज कंपनीज. कंपनीज के पास भी जब बहुत ज़्यादा काम होता है ना, सो इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ फुल टाइम एम्प्लॉय दे गो एंड आउटसोर्स देयर वर्क टू अ थर्ड पार्टी जो उनका काम कर देगा. So mainly India पे companies like Infosys, Wipro and several other companies, all the other companies you will come across who have mentioned themselves as LPO, what they are doing, they are providing outsourcing services. So जब कोई company outsourcing service provide करता है, they are providing several services at one platform because उनका काम ही यही है कि वो different clients की needs को
कवर अप कर सके. So they'll be providing several type of services like legal research करना, drafting करना, background check करना, जो जो lawyer का काम होता है सारी चीजें ये provide करते हैं. नाउ मेनली जो आप काम लीगल एलपीओस में करते हो, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, वो काम इंटरनेशनल वर्क होता है. while sitting in India, you will be working for a US attorney. You will be getting work from a US client, UK client, or any other client from other country. So when you start working in LPO, आपको mainly काम international clients का आएगा. Why? Because lawyers in international market are very much expensive compared to Indian lawyers. This is the fact in all the other areas as well. We all know कि Indian market पे जो services मिलती है that is of good quality and also the rates are cheap. Correct? US attorney will be charging a lot of fees in dollars. If अगर company को option मिल रहा है कि same service, same knowledge, if he can get from someone else who has studied law in India, why not he'll do it? Right? They will be doing it क्योंकि उनके पैसे बच रहे हैं. He is getting a knowledgeable person as well. So that's the reason they outsource their work to India. Companies like Infosys, Wipro and several other companies, they provide outsourcing services. Means उनके client की जो भी needs होगी, they help them with that. अब यहाँ पे आपको किस चीज की knowledge चाहिए? You should be aware of contracts. Contracts play a major role if you want to apply for opportunity in LPO because litigation law differ करता है country to country. Correct? Law differs from one country to another. But contracts are universal mainly. Law थोड़ा बहुत differ करेगा, but जो formatting है, knowledge है, that matters. So if you have knowledge of the contract, you'll be able to work for international clients as well. So develop your skills in contract law. Contract draft कैसे करते हैं? Okay, enhance your skills in contract drafting. Another thing over here is your contract management. अब हम लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना कंपनी में बस यही काम होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. कॉन्ट्रैक्ट आप लॉ कॉलेज में भी जब पढ़ते हो तो यू विल बी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीखना है. आई जस्ट नीड टू लर्न कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, दैट्स ऑल. बट एक्चुअली जब आप कॉर्पोरेट पे एंटर करते हो, व्हेन यू एंटर इनटू कॉर्पोरेट, यू विल अंडरस्टैंड contract in itself has got a whole world. There will be team of 200 people who are just working on contracts. So do you think contract drafting is the only thing that is required? No. Contract management is altogether another area. अब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट का ना साइकिल होता है. हम लोग ड्राफ्ट कैसे करते हैं? ड्राफ्ट के पहले हम लोग नेगोशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, राइट? वी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड हिज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. देन वी ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. देन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ड्राफ्ट पार्टीज ने साइन कर दिया, उसके बाद क्या? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? आपकी लॉ बुक्स में you'll be just understanding about laws related to contract and क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. बट एक्चुअली थिंग्स कॉर्पोरेट पे कैसे काम करते हैं, यू वोंट अंडरस्टैंड दैट. जब आप एंटर करोगे कॉर्पोरेट पे तब आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करने के लिए भी अलग लोग हायर किए जाते हैं. एंड आई हैव स्पेशलाइजेशन इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड ड्राफ्टिंग बोथ. आई हैव वर्कड फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स and in all these companies my role involved contract negotiation, drafting, management and overall. And trust me, the easiest way nowadays of entering into corporate, easy तरीका corporate में घुसने का है to enhance your skills in contract drafting and contract management. अगर आप ये दोनों स्किल्स सीख लोगे, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई फॉर. आप काफ़ी जगह अप्लाई कर सकते हो. एंड एलपीयूज की जॉब रिमोट भी होती है, सो यू विल बी कमिंग अक्रॉस रिमोट अपॉर्चुनिटीज एज वेल, जो जहाँ पे यूएस टाइमिंग और यूके टाइमिंग के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, बट यू डोंट हैव टू गो टू ऑफिस. सो दैट्स बेस्ट. अनदर थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम, एलपीयूज में आपको इनकम ज़्यादा अच्छी मिलेगी. Compared to any other sector, you will be finding good income in LPOs. They pay you good. And right now, LPO का stage ऐसा है जैसे हम लोगों ने software developers and software industry का boom देखा था, right? We saw them booming and how much they are earning now. They are earning in crores as well. 25 lakh, 50 lakh, 1 crore and above salary जाती है software developers की. Same can happen in your LPO sector.
because बहुत सारा काम है. Now you are just not required to have knowledge about law, you are also supposed to have knowledge about AI, you are also supposed to have knowledge about data protection and other areas, because टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. एलपीओ में काम जो होता है वो टेक्नोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करता है. कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आती है, यू आर अ लॉयर, गुड, यू नो हाउ टू वर्क ऑन द टूल. जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है उसमें आपको टूल पे काम करना पड़ता है. सो कंपनीज पे आप वर्ड फाइल पे काम नहीं करोगे कि आपने फोल्डर सेव कर लिया एंड हो गया. देर विल बी अ सेपरेट टूल जहाँ पे आपको फाइल्स मैनेज करनी पड़ती है. क्यों? बिकॉज कंपनीज एंटर इनटू थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ डे. दे एंटर इनटू थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फोल्डर पे सेव कर दो एंड हो गया. इट्स नॉट पॉसिबल दैट वे, राइट? So that's why they work on the tool. And if you are a lawyer and you have knowledge about working on the tool, it will help you a lot. And you will be getting good salary in this particular field. Starting salary, like if you guys are interested in, starting salary as a fresher from a non-NLU background, you can expect to earn around 5 to 6 LPA. Okay, that is lakhs per annum, LPA ka full form. So you can expect this as a starting salary. That is pretty much good compared to your litigation. So what kind of tools you are asking? See, every company have different tools they use. It totally differs. So if you want more on this, like we actually have a course on contract management as well, that is starting from 15th September only. Over there we are going to train you on contract management tool कि आप tool पे कैसे काम कर सकते हो, एंड कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं जब आप इस पर्टिकुलर फील्ड पे अप्लाई करते हो. एंड वी ऑल्सो हैव अ कोर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इफ यू वांट टू एनहांस योर स्किल्स इन ड्राफ्टिंग. So in the course actually we are going to train you on how to work on these tools as well. So I cannot name you the tools because हर company का tool अलग होता है. Okay, but we can for sure explain you and show you how the tool works. We the separate tool that we have, we can show you that. Yes, it's a practical course. All LeDroit courses are completely practical in nature. So if you go for the drafting course, आप actually drafting सीखोगे. स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है हर टॉपिक की. इफ यू गो फॉर द CLM टूल लाइक कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, अब वहां पर सीखोगे कि टूल पे कैसे काम करते हैं, कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है एंड ओवरऑल थिंग. सो everything is completely practical. All courses are completely practical. Okay, now I'll move ahead with the in-house counsel now. So what is in-house counsel? ये लोग कौन होते हैं? सेपरेट कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव अ कॉम्बो एज वेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, ड्राफ्टिंग का एंड मैनेजमेंट का, एंड यू विल बी गेटिंग सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर दैट. सो इफ यू वांट यू कैन चेक आउट द वेबसाइट. ओवर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट training combo, and over there you will be finding these two courses and you can register for that. Okay, if you want you can reach out to the team admin. I'll just drop out the number. You can reach out to us on this number. Yeah. Okay, now I'll proceed ahead. Okay, in-house counsel. So ये लोग क्या करते हैं? In-house counsel are the people who are hired in companies only. Okay, they are hired in companies, but their role is different. They are just not required to have knowledge about contract. इनको खाली contract की knowledge नहीं होनी चाहिए. इनको knowledge litigation की भी होनी चाहिए. They should be having knowledge of litigation as well as your corporate, both the things. So this role is very important, and after a period of time, after a period of let's say 7 to 10 years, you can expect salaries in like in a lot of number, in a lot. I cannot tell you how much because it's a lot. You can expect to earn a lot as in-house counsel, but that will come after gaining experience more than 5 years. Okay, that will come at that time. So mainly inki salary can go around your 40 lakhs and above after 7 to 10 years, but they earn good, and also they are required to be have a lot of knowledge from both the worlds, litigation as well as corporate sector. Why is it so, and इनका role क्या होता है? So इनका रोल ये होता है टू गाइड द कंपनी विद द कंपनीज रिक्वायरमेंट्स. सो कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ, दे विल बी द वन रिप्लाइंग टू दैट लीगल नोटिस. कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करना है, दे विल बी द वन ड्राफ्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट.
सो इनको कॉन्ट्रैक्ट भी आना चाहिए एंड इनको लिटिगेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कोर्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं एंड दे विल बी द वन डीलिंग विद द आउटसाइड एडवोकेट्स. सो कंपनीज की रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि यू जस्ट कैनॉट रिलाई ऑन वन पर्सन और वन टीम. कंपनीज हैव कॉन्टैक्ट विद अदर एडवोकेट्स जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. ओके, सो कंपनीज टाई अप विद दीज एडवोकेट्स एंड जब भी कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है, they hand over their cases to these independent practitioners who are working in that field. Okay, so ये in-house counsel का काम होगा to deal with that, to be in touch with those advocates who are working for the company and यहाँ पे client के साथ भी जो भी dealings होती है वो भी करना. So they should be having knowledge about your litigation, legal notice कैसे draft करते हैं and everything, civil suits कैसे file होता है, how to write written statements as well, and they should also be having knowledge about contract drafting. Apart from that, if company wants to expand their business, let's say company की mergers and acquisitions की deal आ गई है, so in that scenario as well they should be aware of it कि mergers and acquisitions में due diligence कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेक करते हैं और कैसे डॉक्यूमेंट्स को रेफर करते हैं, रिव्यू करते हैं, ये सारी चीजें भी इनको आनी चाहिए. So it's just not limited to one sector. They should be having knowledge of all the sectors. So to apply for position of in-house counsel, you should be having this thing, लिटिगेशन एक्सपीरियंस. अगर आपको लिटिगेशन का 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, you can apply for this opportunity as in-house counsel. Just add on contract related skills. So आपके पास ऑलरेडी अगर 1-2 साल का लिटिगेशन एक्सपीरियंस है, just add on your contract drafting and management skills, contract life cycle management, and that way you will be good to go. आपके पास काफी skills है to apply for the position of in-house counsel. Okay, in case अगर आपको कोई भी डाउट है ना, do let me know in the chat box so I can reply to you. Okay, I'm just quickly moving ahead with the topics. So far I believe you guys are able to understand everything. All right, next is your consulting firms. इनका क्या रोल होता है? Consulting firms जो होते हैं ना, उनका काम होता है कि आपको गाइड करना. So let's say if anyone wants to register a company, so whom they'll be reaching out, any organization, कोई भी firm जिसको knowledge है company register कैसे करते हैं, to right, वहीं आप reach out करोगे. So lawyers also work in consulting firms. So your firms like Online Legal India and Vakil Search, I think so, they are also your consulting firms. इनका काम क्या होता है? They provide you services with regard to tax filing, your company registration, your trademark registration and all. So अगर आपको इस फील्ड में जाना है, then enhance your knowledge about company law, intellectual property rights. These are the two major sectors on which you have to work on your skills. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फाइलिंग कैसे करते हो, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब आपको आना चाहिए. नाउ एट लेड्रॉइट वी रिसीव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो LLM करके आते हैं, LLM इन intellectual property rights they have done, but they are not aware of how to actually file for trademark, copyright or patent. So if you have done your law college, you have also done LLM, and still you're not aware of how to file for these things, how you can apply for opportunities? You have invested nearly around 7 years in law school, and am I audible now? I'm so sorry. There was like power cut. So, am I audible? Can anyone just confirm I'm audible or not? Let me know, please, so we can proceed ahead with the session. I'm so sorry. There was connectivity issue. प्लीज कंफर्म करिए चैट बॉक्स में कि आवाज आ रही है आपको या नहीं. ओके, ऑलराइट. Alright, thank you so much. Great, thank you so much. Alright, let me just know once the screen is visible again. Okay, I just reshare my screen. Okay. So we were discussing about intellectual property rights and consulting firms में क्या काम होता है. So you have to basically guide the company कि आप company register कैसे कर सकते हो आपकी company के लिए. Like if you want to start a business, which type of business will be beneficial for you, आपको partnership
चाहिए, जॉइंट वेंचर करना चाहिए, या फिर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, which type of company you should go ahead with. Or if you are providing intellectual property rights, then you should be aware of how to file for IPR. So even people invest 7 years in law school, they are not aware of how to file for intellectual property, right? So they should be aware of it. And we also have a course on IPR that trains you how to actually apply for trademark, patent, and copyright. Step by step process is explained. For courses, you can check out our website www.ledroitindia.in. Okay, and the courses are definitely going to be helpful for you. आपको कुछ भी करना है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और अबाउट दैट फील्ड. एंड इफ यू ऑलरेडी नो, एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा क्यों? रीजन इज उसे आपको अलग से ट्रेन नहीं करना पड़ रहा है इन चीजों के लिए. आप अगर इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हो, दे डोंट हैव टू ट्रेन यू. कोई भी आपके साथ बैठ के आपको नहीं सिखाने लगा है. दैट इज द हार्श ट्रुथ. No one is going to sit with you and explain you how to do things, right? Even when you get into corporate, you start doing job or anything, no one is going to sit and explain you the things. That is your responsibility. You should be aware of how to do it. So how you can do it? You can do it with the help of courses, and in our LeDroit courses we actually train you, and we also give you proper attention. So we sit with you and explain you how to do things. Okay. Next is your next opportunity इज योर कंप्लायंस ऑफिसर. इनका काम क्या होता है? कंपनीज में चेक होते हैं. आपने लेबर लॉ अगर किया होगा तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस लेबर लॉ ऑफिसर, राइट? सो दैट्स द रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर. जो भी प्रोडक्शन कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं जहां पर, स्टील कंपनी एंड सो, हर जगह एक कंप्लायंस ऑफिसर हायर किया जाता है टू मेक श्योर दैट द कंपनी इज फॉलोइंग ऑल द लीगल गाइडलाइंस. हर कंपनी को चलाने के लिए लीगल कंप्लायंसेस होते हैं कि लेट्स से कंपनी का टर्नओवर इज more than 10 crores. In that scenario, कंपनी के ऊपर सेवरल लीगल ऑब्लिगेशंस आएंगी कि उन्हें अपना टैक्स कैसे फाइल करना है, उनको उनके पास ज्यादा एम्प्लॉयज है तो उनको एम्प्लॉयज को कैसे रखना है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट इन लेबर लॉ एज वेल, राइट? कि लेबरर्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मोर देन 10 लेबर्स रखती है तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने होते हैं, उनके लिए एक अलग रूम बनाना पड़ता है एंड ऑल. सो same will be the role of compliance officer to check whether the company is complying with all the legal norms and regulations, ताकि कंपनी के अगेंस्ट कल को कोई लीगल चार्जेस ना फाइल हो, कोई लीगल केस ना फाइल हो saying that they have not complied with the rules and regulations. So for this you should enhance your knowledge in particular field like labor law, as well as your this thing, फाइनेंस लाइक टैक्सेशन लॉ, लेबर लॉ, टैक्सेशन लॉ. और अगर डिफरेंट सेक्टर है लाइक हेल्थ केयर में आपको जाना है तो अंडरस्टैंड अबाउट मेडिकल लॉज एंड ऑल, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानिए कि लॉ क्या कहता है. Okay, so this way you will be able to apply for these roles. And compliance officers are also paid in good amount. They are also paid in huge amount because they are required to give certain examinations as well. If required government examination hai to, otherwise they can, like if they have proper knowledge, they can apply for the role of compliance officer. कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वी ऑलरेडी कवर्ड कि कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कैसे करते हैं कंपनी पे, एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है स्टार्टिंग से एंड तक. सो कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग में क्या प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो जाता है फिर कॉन्ट्रैक्ट का क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपकी कवर होती है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में. Next is your ADR, alternative dispute resolution. So in this you'll be coming across arbitration, negotiation, conciliation, right? एंड मीडिएशन. सो इनका काम क्या होता है? आज की डेट में वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट कोर्ट्स आर filled with plethora of cases. Courts के पास बहुत सारे cases है. They don't have like time to provide easy resolution. So what companies do? They go ahead with ADR mechanism, alternative dispute resolution mechanism, so that they hire arbitrators जो उनका केस रिजॉल्व कर दे आउट ऑफ कोर्ट सेटिंग पे. आप कोर्ट नहीं चाह रहे हो, आपका मैटर कोर्ट के बाहर रिजॉल्व हो जा रहा है, दैट इज व्हाट योर ADR इज. Okay, so companies pay a lot of amount to your arbitrators. Huge amount is paid to the arbitrators. It can also depend on the contract value. So arbitrator can also charge based on the
contract value. So we can go with any x amount, okay, whatever is the amount of that particular contract जिसके regarding dispute हुआ है कंपनीज के बीच में. So as an arbitrator आप 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या 1% आप अकॉर्डिंगली अपनी फीस डिमांड कर सकते हो, क्योंकि आपने इतने बड़े मैटर को सॉल्व किया है. करेक्ट. सो दैट्स हाउ आर्बिट्रेटर्स एंड कंसिलिएटर्स आल्सो अर्न, बिकॉज वो गाइड करते कंपनी को कि वो लोग कैसे म्यूचुअली अपना मैटर रिजॉल्व कर सके. सो एडीआर हैज गॉट अ ह्यूज स्कोप इन फ्यूचर. यू कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड राइट नाउ ऐसे एग्जाम्स नहीं होते अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन एन एडीआर फर्म. दैट वे यू विल बी एबल टू क्रिएट योर करियर एज आर्बिट्रेटर एज वेल. ओके. नेक्स्ट इज लाइक सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे रोल्स आपको अप्लाई करने होते हैं इफ यू वांट टू गो अहेड विद दिस थिंग, particular law firms or anything. The roles you can come across will be of associate, senior associate, partner, and so on. So law firms may mainly job opportunities you'll be coming across will be of junior legal associate or legal associate, senior associate, and so associate is the fresher level opportunity, junior legal associate or legal associate जहाँ पे आपका experience 0 to 2 years का होना चाहिए in between. If you have that like if you fall within that, you can apply for this. And इस position के लिए you should be having knowledge of drafting, at least basic skills. ओके. सीनियर एसोसिएट में इस लेवल पे आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि आपने कैसे मैटर्स डील किए हैं, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है लॉ फर्म में काम करते करते. सो आपको कितना नॉलेज है, किस फील्ड में यू हैव प्रिपेयर्ड योर स्पेशलाइजेशंस एंड ऑल थिंग्स दैट विल बी कवर्ड. एंड पार्टनर इज द मोस्ट सीनियर लेवल. जब आप काफी साल से प्रैक्टिस कर रहे होते हो, then you can start your own law firm or you can get promoted as a partner in a law firm. Okay. Now so let's directly jump on to our next field, that is your in-house counsel. You'll be coming across roles of so sorry, one second. You'll be coming across role of legal officer or executive or assistant or deputy counsel or general counsel. General counsel top position hai. It can also be like your legal counsel, legal head in that way. Legal officer, legal executive or legal associate. This in this position आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए. जैसा कि मैंने कहा, टू अप्लाई फॉर इन हाउस काउंसिल पोजीशन हैव नॉलेज अबाउट लिटिगेशन ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए. लीगल नोटिस रिप्लाई कैसे करने हैं, सिविल सूट्स कैसे होते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. एंड प्लस यू शुड ऑल्सो बी हैविंग नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड ड्राफ्टिंग. ये दोनों स्किल्स आपको आनी चाहिए. Assistant and deputy general counsel, once you get a certain level of experience, that time आपने कैसा वर्क किया, किस किस फील्ड में आपने कंपनी को गाइड किया, ये सारी नॉलेज के बेसिस पे you get promoted to your general deputy general counsel and so on. Okay. Now all right, let's directly move on to your this particular thing, your CV review, how your CV should look like and how to apply for these opportunities. Okay, I'll just now jump onto this thing. Any doubts with regard to legal career guidance? I hope this was helpful for you all so far. Okay, let's take a minute. Okay, we'll just quickly go through your queries. So now you can drop your queries and questions. Then we will move ahead with your interview tips and how to prepare CV and apply for opportunities. The main part for which you were waiting for. Okay. So Manisha is saying, I'm a fourth year student of BLLB interested in corporate field. So what are the essential qualifications to get placed in company or law firm? Again, एनहांस योर स्किल्स इन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग. कंपनी पे जाना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी ऐड कर लोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ओपन हो जाएगी. फिर आप खाली इंडियन कंपनीज पे नहीं, बट ऑल्सो इंटरनेशनल कंपनीज हु आर लुकिंग आउट फॉर लॉयर्स, ओवर देयर एज वेल यू कैन अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटीज. सो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड मैनेजमेंट इज द फ्यूचर. प्लस एनहांस योर स्किल्स इन सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, क्योंकि आईटी कंपनीज अगर डेवलप हुई, दे आर ऑल्सो इन नीड ऑफ लॉयर्स जिनको आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स की नॉलेज है. करेक्ट. दे शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ इट. सो अंडरस्टैंड अबाउट सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल.
कि क्या होते हैं, क्या चीजें कंसिडर की जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, mergers and acquisitions. So it's just not limited to one field. आपको knowledge होनी चाहिए different fields की, especially if you are applying for the role of in-house counsel, if you are applying for the role of this thing, legal analyst, contract analyst in LPO. In that scenario, just focus on contract drafting, contract review, negotiation, and contract management. And for this, all the skills that I mentioned, we have a course on contract lifecycle management starting from your 15th September. We also have a course on contract drafting where you are going to learn actual contracts used in company, हर contract की क्या importance होती है, and how to draft the contracts. Okay, you can check out our website or you can reach out to the team members in case you have any doubt. Okay. Any other? Can non-medical student enter into medical law related field? Is it necessary to be from medical background? No, you can enter into. Like, of course, if you have knowledge about, if you are from science background, in that scenario, it will work as an advantage for you. But over here, it will be kind of a harder way for you. The road will be kind of harder, but eventually you'll get into it. So आपको क्या करना होगा? You have to enhance your skills and get experience in medical law. There are several law firms जो medical और healthcare matters handle करते हैं, drugs and cosmetics के. Try to get internships or job in those law firms. On the other hand, learn about medical law, go through, and majorly you will not come across a lot of this thing, certification or this thing covering healthcare laws. Okay, so work on these sector. You have to work it out. तो आपको अपने ही लॉ को पढ़ना पड़ेगा, इंटरप्रीट करना पड़ेगा टू गेट इनटू दिस फील्ड, बिकॉज ये फील्ड सारी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है. सो ट्राई टू गेट इनटू द लॉ फर्म्स डीलिंग विद दीज मैटर्स एंड read the law. जितना पढ़ोगे उतना बेटर. ओके, जस्ट डोंट रीड द लॉ कॉलेज बुक्स, गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज मेडिकल हेल्थ केयर ये सब टॉपिक्स लॉ कॉलेज में कवर नहीं होते हैं. यू हैव टू गो अहेड एंड रीड अबाउट दीज थिंग्स. सो कॉलेज लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, बुक उठाओ, पढ़ो कैसे केसेस फाइल होते हैं. यू विल गेट टू नो. The more you get to know about the cases, the more you will be able to have understanding. So two skills that will work: have knowledge about medical law. Second, हैव नॉलेज अबाउट ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग इकलौती ऐसी स्किल है जो आपको हर फील्ड में काम आएगी. आपको लॉ में करियर बनाना है, वर्क ऑन योर ड्राफ्टिंग स्किल्स, एनहांस योर ड्राफ्टिंग. लिटिगेशन ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, रियल एस्टेट ड्राफ्टिंग, किसी भी फील्ड में चल जाओ, आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए. सो वर्क ऑन दैट. ओके, ऑल राइट. नाउ डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? एनीवन? ऑल राइट. How people choose you for a corporate field, and if you have not done internship in tier 1 or 2 firm, they will select us, or we should go for litigation. It doesn't matter. It doesn't matter आपने internship कहाँ की, वो भी matter नहीं करेगा. क्या matter करे आपने internship पे सीखा या नहीं, that is going to matter. Okay, अब many people go for online internship, they do offline internship as well. Okay, आपने कहाँ से इंटर्नशिप की, ये वो कहीं ऐसे नहीं कि बिल्कुल मैटर नहीं है. ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैटर करेगा कि अगर आपको टैग लगा हुआ है टियर 1 लॉ फर्म का, आपने काम किया हुआ है सिविल अमरचंद एंड मंगलदास में, आपने काम किया है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा कहीं पे वो टैगलाइन मैटर करेगा, एकदम थोड़ा सा. बट अगर आपने इंटर्नशिप में कुछ सीखा ही नहीं, तो हाउ डज इट मैटर? करेक्ट. सो व्हाट मैटर्स ओवर हियर इज आप जहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो या नहीं, whether you are learning anything or not. So if you are going to the court and आपको एडवोकेट खाली बोल दे रहे कि चाय ले आओ, फाइल पास ऑन कर दो, ये कोर्ट से वो कोर्ट जाओ, सो दैट एक्सपीरियंस यू कैन नॉट शो ऑन योर सीवी, है ना. आप सीवी में नहीं दिखा पाओगे कि आपने इंटर्नशिप में क्या किया, फाइल्स पास ऑन की. सो ऐसी जगह इंटर्नशिप करो जहाँ आप एक्चुअली सीख रहे हो. ऑनलाइन इंटर्नशिप्स में भी सिखाया जाता है, जरूरी नहीं है सब ऑनलाइन इंटर्नशिप्स खराब होती है. We at LeDroit also provide online internships. We give you tasks related to legal research and article writing. So internships करो, limited करो, बाकी टाइम अपना skills enhance करने में लगाओ. If you have got, I have also, like I had a friend जिसने अपने पूरे लॉ स्कूल में एक भी इंटर्नशिप नहीं की. लास्ट में उसने एक इंटर्नशिप कर ली थी just for the name sake, and she learned something out of it. Later on she got the placement in Bajaj, and वहाँ पे उसका रोल था written statements draft करना.
So while working in the corporate, her role was to work on the litigation matters. So you should be having knowledge about litigation as well as contracts, because these things matter. So अगर आपको litigation का experience है, that is going to help you. जहाँ पे भी internship करो, अगर आपका goal decided है, first is try to get internship in that particular sector only. Second, limited internship करो. We come across CVs जहाँ पे 60-20 internships है, that no one is going to read that. प्रो टिप ऑफ क्रिएटिंग अ सीवी इज 2 पेजेस से ज्यादा का सीवी नहीं होना चाहिए. डोंट कीप योर सीवी ऑफ मोर देन 2 पेजेस. सो ये 2 पेज में आप क्या क्या डाल सकते हो उस पर फोकस करो. अगर मैंने 60 इंटर्नशिप्स की है, 2 पेज काफी नहीं है इंटर्नशिप बारे बताने के लिए. ना ही एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम है कि वो आपके इससे जाएगा, गो थ्रू करेगा कि आपने क्या डाला क्या नहीं डाला. राइट, 1 सेकेंड. ओके, या सो एम्प्लॉयर आपको पता है कैसे चेक होता है. सो इवन एट लेड्रॉइड वी प्रोवाइड सेवरल अपॉर्चुनिटीज. वी रिसीव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस विद रिगार्ड टू योर लीगल इंटर्नशिप और लीगल जॉब, एंड सो व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, people do apply, and we receive these opportunities in a lot of number. एक अपॉर्चुनिटी के लिए we receive around 20,000 applications. 20,000 में आपका सिलेक्ट होना, कैन यू अंडरस्टैंड how tough is the competition? Can you imagine? So do you really think कि just having your this thing law degree you will be able to compete with that competition जहाँ पे लोगों ने काफी अच्छी अच्छी जगह से किया हुआ है और उनको ड्राफ्टिंग भी आती है, उनको सब कुछ आता है. So you have to work on yourself. By this I don't mean to make you feel demotivated. Motivated feel हो, बिकॉज ये प्रोसेस इजी नहीं होता है. कंपटीशन ज्यादा टफ है इंडिया में. वी ऑल नो हाउस द पॉपुलेशन. सो इट डजेंट मैटर, आज नहीं तो कल तो जॉब लगेगी. तब तक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. आप सीखो कि व्हाट आर द एरियाज मे बी यू आर नॉट डूइंग करेक्टली. मे बी आप अप्लाई कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो देर इज फॉल्ट एट द प्रोसेस यू आर अप्लाइंग फॉर. राइट, सो वी कम अक्रॉस लाइक आपको इंटर्नशिप कैसी जगह करनी चाहिए, कितनी इंटर्नशिप करनी चाहिए. अब एक्सपीरियंस, लेट्स से आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप्स 10 जगह कर ली है. डोंट मेंशन ऑल दैट 10 इंटर्नशिप्स ऑन योर सीवी. डोंट मेंशन दैट. मेंशन ओनली द इंटर्नशिप्स वेयर यू हैव एक्चुअली गेन नॉलेज, जहाँ पे एक्चुअली लिखा है, आपने कुछ किया है. ओनली मेंशन दैट. सो व्हाट्स द अदर थिंग इज, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी पे आप अप्लाई करते हो ना, you have to edit your resume accordingly. So if I'm applying for the role of content writer and वहां पे मैंने अपना experience contract drafting के बारे दिया है, my experience is not matching over there. रोल है कंटेंट राइटर का, मुझे आना चाहिए लीगल रिसर्च कैसे करते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं. दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ओवर देयर. Correct? So if I'm applying for the role of content writer and I'm showing experience of litigation or my experience of contract drafting, they are not going to count me unless मैंने articles लिखे हुए हैं पहले, unless I have SEO knowledge as well कि SEO management कैसे करते हैं, article कैसे लिखते हैं, legal research कैसे करते हैं, hyperlink कैसे करते हैं, ये सब मुझे आता है, तो I'll be considered for that role as well. Okay, so same goes with your other opportunities. If they are hiring for a person who have knowledge of contract drafting and management and I'm applying for that role directly, मेरे CV में litigation का experience है, मैंने 3 साल इस advocate के अंदर काम किया, 1 साल independent practice किया. Now I want to switch my career to corporate. My CV will not be selected. Why? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लिटिगेशन का है. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ लिटिगेशन, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और हाउ थिंग्स वर्क इन कॉर्पोरेट. सो इन दैट सिनेरियो कंपनी इज गोइंग टू कंसिडर माई एक्सपीरियंस एज जीरो. भले मैंने 4 साल काम किया लिटिगेशन में, बट स्टिल माई एक्सपीरियंस इज बीइंग काउंटेड एज जीरो बिकॉज ऑफ द रोल. सो जो आपने काम किया है एंड जहां आप अप्लाई कर रहे हो, दैट शुड मैच. सो इफ यू हैव डन 10 internship and any of the experiences matching with the role you are applying for, mention that internship only. Okay, next is certifications पे भी ना हर जगह जाके certification मत करो. People go ahead and say what they do, they mention webinar ये किया, boot camp मैंने ये किया, मैंने ये course किया, मैंने ये diploma किया.
50 they will show, and mainly people go for free things. Even at LeDroit we provide you free webinars and stuff. Even the sessions that we provide, people attend mainly to get the certificate. आप सर्टिफिकेशन के लिए भी हर जगह मत जाओ. आप देखो आप सीख रहे हो तो आप अटेंड करो. जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट डोंट डू थिंग्स. इवन इफ यू आर डूइंग कोर्सेज, do courses that provide value. Honestly speaking, I have seen like लोग हमारे पास आए हैं who have spent 45,000, 50,000 for a course of IPR, and still they haven't learned how to file intellectual property, which at LeDroit we are providing at just rupees 2,500. Same skills, but actually showing you how to register for intellectual property rights, trademark, copyright, and patent. So even when you're going with the courses, be selective. Unnecessarily कोई चीज महंगी है doesn't mean that they are providing you quality. Don't trust on that. Just because a person is showing that they are providing you 50,000 कोर्स, 2 महीना का कोर्स है, आप 2 महीना सीरियसली इंटरेस्टेड होके पढ़ोगे? आर यू सीरियसली गोइंग टू सिट एंड स्टडी फॉर 2 months? No one is going to pay that much attention. There will be a time जहाँ आप बोर हो जाओगे और आप छोड़ दोगे चीजें. That's the reason again कि हमारे जो कोर्सेज होते हैं 15 to 10 days के पीरियड में होते हैं, और कीप इट वेरी लिमिटेड. अननेसेसरली हम लोग एक्सटेंड नहीं करते ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे. ओके, सो कीप डू थिंग्स बट लुक फॉर द क्वालिटी. अननेसेसरली हर जगह हर चीजें कलेक्ट करके अपने सीवी में मत भरो. लिमिटेड चीजें करो जो एक्चुअली दैट मेक्स सेंस. मेंशन दैट थिंग्स ओनली. ओके, नाउ लेट्स फोकस. आपको कैसे कॉल आ सकता है एम्प्लॉयर का? एज आई सेड कि मुझे कभी भी अप्लाई नहीं करना पड़ा, मुझे डायरेक्टली कॉल आया एम्प्लॉयर्स का, and then I appeared for the interview and then I directly got the job. So in this 5 years I have gotten like I worked with 4 organizations. Okay, and सारी organizations का मुझे खुद से call आया था. There were other organizations as well which I rejected, that I didn't like the opportunity. So जहां पे भी आप जाओ, स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जॉब भी जब मिलती है ना, 2 रीजन होता है. एक होते हो आप डेस्परेट कि आपको जॉब मिल गई, आपको कॉल आ गया, यू विल बी गेटिंग अ जॉब नाउ. सेकेंड होता है एक्सपीरियंस कि आपको जॉब मिल गई, आप खुश हो जॉब पे, आपको मन था इन हाउस काउंसिल बनने का, you got the job related to legal content writer. Are they matching with your career goals? No, they are not matching. और second is आप कर रहे हो काम पर आपको खूब काम कराया जा रहा है and you're not even liking it. So will that make sense? No. So consider these things as well. जहां आपका मन है, जहां आपका इंटरेस्ट है, वही जगह जाओ, क्योंकि ये लाइफ टाइम की बात है. आप 1 साल 2 साल खाली नहीं कर रहे हो. दिस इज अबाउट योर करियर. यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग थ्रू आउट टिल द टाइम यू रिटायर, है ना. 60 years की एज तक मे बी आप काम करोगे, तो 60 years तक आप मन मार के काम नहीं कर सकते हो. You should be having heart and willingness to do that work. So start working on it. अपनी research skills बढ़ाइए. Research on the areas की हर field आपको क्या outcome दे रही है. Accordingly prepare your skills. Internships करो and then job apply करो. हर job के लिए CV में पहले जानते हैं कि क्या क्या होना चाहिए. So we understood different legal career prospects and all, right? So आपका CV में क्या क्या होना चाहिए. Elements of CV, you have to mention contact details. Reason, because if you are mentioning contact details, आपको call आएगा. Contact details में भी don't mention your mail ID that you created when you were in school, right? Anything like tiakumari420@gmail.com. ऐसे mail IDs मत रखिए. Create a professional mail ID with your name that sounds professional, and that you should mention on your CV. Career objective क्या होता है? You have to mention a brief line about your career goals, that why you should be hired. So as an employer who is receiving a lot of who is receiving a lot of applications, what he is going to do, he is going to uh, quickly, you have just got 2 seconds you have got to impress and create an impression कि employer आके आपका resume खोले. रेज्यूमे खोलना भी अलग बात है. आई वर्क ऑन दिस थिंग कि कैसे एम्प्लॉयर आपका रेज्यूमे खोलेगा. राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन योर सीवी. ओके, सो लेट्स फोकस ऑन योर सीवी. करियर ऑब्जेक्टिव में यू हैव टू मेंशन कि व्हाट आर योर करियर गोल्स. आप क्या करना चाहते हो. सो यू मस्ट हैव हर्ड द क्वेश्चन व्हाट आर योर करियर गोल्स आफ्टर 5 years.
what, where do you see yourself after 5 years. Isme they are trying to know whether you're clear with your picture, whether you are clear with your objective, like what you actually want to do. That is what they are going to understand. So in your career objective, we have shared two samples with you. You can use these samples, okay, on your CV. You can mention this. So first is, on the top right hand side, you can mention your contact details, your name, address if required. Address may you can simply mention the state, no need to mention full address, okay, city and state you can mention. Then contact details, and that's all. Name, email id, contact details and address, ताकि एम्प्लॉयर को पता हो कि आप कहाँ से हो. ओके. नेक्स्ट इज करियर ऑब्जेक्टिव. करियर ऑब्जेक्टिव पे आप सिंपली 2 to 3 लाइन्स पे एक्सप्लेन करोगे that what are your career goals. So here on the screen we have two examples. You can go through it. Highly motivated law graduate with a strong academic background in corporate law, seeking an entry level position at a reputed organization to leverage my knowledge in contract negotiation and compliance to support corporate clients effectively. So what is happening over here? आपने बताया कि आप क्या पढ़े हुए हो. You informed him about your skills. Also, what you are looking out for, what you are seeking out. You are seeking out for the role in contract in negotiation and compliance, where you can enhance these skills, right? So that is the purpose of your career objective. Okay. Once the career objective is mentioned, now you have to mention your education. Education में what are the things you are going to mention? Don't just mention your law college, okay? You have to mention any other thing. So 10th and 12th में how much you scored. Best practices, आप एक table create करना अपने CV में. Create a table with your education, or you can mention it as degree or qualification, percentage, okay, and year. Qualification, percentage and year. 3 columns बन गए. First column में 10th में whatever board it was, ICSE, CBSE or state board, mention that. Then mention which year you passed on, okay, and then mention the percentage you got, okay, 60%, 80%, whatever the percentage was. Same with your 12, same with your undergraduation. अगर आपने undergraduation कोई और college से किया है, किस year में you graduated, name of that university, and then the percentage you achieved. Final year की percentage mention करना, not the first year, second year. Mention the final year percentage. If you are applying for internship, then your latest percentage only, okay. If you are applying for job, obviously you have graduated or maybe you are still in law college, then the latest percentage or the final semester percentage. Post graduation is your law basically, that you have to mention. Or this thing, LLM, if you have done, same, university name, college name, year with in which you graduated, and the percentage. I was also CS person. I was doing CS, okay. So even though I didn't complete my CS, company secretary, but still I did till executive. So I mentioned that percentage as well कि मैंने किस stage तक CS किया था and what was my percentage. I also did MBA from Nursing Munji. So I mentioned that as well on my CV, from where I have done MBA. So I have done law as well as MBA, okay. So I mentioned MBA and the percentage. Why I did MBA? That was because of my personal interest. I had interest in business administration and all. That's the reason I went ahead with it. Okay. So below this, now we have created this table. ये major education qualifications हो गए हमारा college, school and post graduation. Now below this, create a this thing column for additional certifications, additional qualifications or additional certifications. Over here mention about the certificates you have got, the skills you actually got. So what you are going to do, let's say you have done a course from LeDroit, you will mention a live certificate course on intellectual property rights. Then below that you're going to mention skills you have learned. रीजन इज आप बता रहे हो एम्प्लॉयर को कि आपको स्किल्स क्या क्या आती है, आपने कोर्स किया तो आपने कोर्स में क्या सीखा. सो very, keep it very short. Don't enhance it unnecessarily, okay. Short में हम लोग लिखेंगे तो skills learn में simply will mention or like your trademark filing, trademark search, patent filing, copyright filing, and this way, okay. Same with, let's say, contract drafting. You have done a course on contract drafting, you will mention certificate course on contract drafting, skills learned,
Over there you'll mention drafting of NDA, master service agreement, service level agreement, SOWs. So this way, what you have done, you have showed that you have done a course, and in course you have learned these skills. Now mention the courses which you actually can recall, क्योंकि इंटरव्यू पे आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपने ये कोर्स किया, आपने इस कोर्स में क्या सीखा, अगर आपने ये सीखा है तो आप बताओ ये काम कैसे करते हैं. Okay, so when you go for the interview, try to do a revision whatever you have learned. Try to do a revision of those things as well, कि आपने क्या सीखा था, क्या नहीं सीखा था and all. Okay, next is your skills we covered. Work experience. वर्क एक्सपीरियंस में आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस आएंगे एंड जॉब एक्सपीरियंस आएंगे. इंटर्नशिप एक्सपीरियंस यू कैन शो कीज, अगर लेट्स से आपको जॉब मिल गई थी, अब आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो 1 साल काम करने के बाद, इन दैट सिनेरियो एज वेल आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी दिखाओगे और जॉब एक्सपीरियंस भी दिखाओगे. रीजन इज क्योंकि खाली आप एक जॉब एक्सपीरियंस दिखा रहे हो अपने वर्क एक्सपीरियंस में, एक ही कंपनी का नाम एंड आपने क्या काम किया, दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन. आपने ऑफकोर्स इंटर्नशिप्स भी की थी राइट, और एक्सपीरियंस है आपको, तो आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एक आध उसमें रख सकते हो. और इफ यू आर currently applying for opportunities, so in your work experience you have to mention internship. अब internships या company कैसे mention करोगी, you'll mention the name of the company. Below that you'll create a column, and beside it you'll create a column. उस कॉलम में you'll mention the tenure, आप उस कंपनी पे कितने टाइम तक आपने काम किया है, you're going to mention that. Okay, so this is going to be the organization name, the role you were working for, your tenure, and location if it was an offline internship. So this way you'll create things. Okay, and iske niche mein, below this you're going to provide a description about the role, like the tasks you did during your internship, आपने क्या काम किया था. So you have to describe that. How you'll do it, let's say that the name of the organization was LeDroit India, your role was legal intern. Okay, legal intern, tenure 1 month. 1 month tenure कैसे लिखेंगे हम लोग, starting August 13th till 13th September. Okay, August 13th September 2025. So this way we are getting a clarity that this person worked in that internship for a period of 1 month, and it was online. So it will be LeDroit India, legal intern, 1 month online internship. Below this, I'm going to explain what are the things I did. I'm going to explain during like let's go ahead with did legal research, wrote several articles on topics, mentioned several topics, created PPTs and all this thing. You are mentioning the task you actually did. Same with, let's go with litigation experience. If you have litigation experience, you'll mention the name of the firm. If you were working with firm or working under any advocate, mention the name of the advocate, the tenure, for how long you were working with that advocate, then the court, in which court you were litigating, mention that, and the work you have done. You can mention skills like did reply to several legal notices, and mainly dealt with family law matters, civil law matters, also handled bail applications from time to time. So this way you have to simply explain things in brief manner. Brief as in keep it short, 2 to 3 lines. Now another thing you can do over here is, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो ना, एंड उनकी रिक्वायरमेंट आपके सीवी से मैच कर रही होती है, यू हैव टू हाईलाइट योर स्किल्स. आप अपना काम हाईलाइट कर रहे हो, एंड जॉब अपॉर्चुनिटी में लिखा हुआ था दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ एनडीए, मास्टर सर्विस अग्रीमेंट एंड so what you'll do, if you have that experience and you have worked on NDA, master service agreement and all, आप अपने जहाँ experience explain करते हो ना, ये brief वाला, over there you'll bold these things. You will highlight the words contract drafting, you'll bold it out so that it's easy, it's visible to eyes. Because time कम है, we have to catch the attention of the employer. 2 seconds में he's going to judge whether he wants to see your CV or not. Keep your CV very simple, don't keep it complicated. Keep it in 2 pages only, not beyond that. And mention the skills. जहाँ पे आप skills mention कर रहे हो work experience में, highlight those things. Okay, so based on the opportunity you are applying for,
You have to edit your resume as well so that it matches with the employer requirements, and accordingly your CV is noticeable. ऑलराइट, वंस दिस इज डन, एक और पैराग्राफ बनेगा वर्क एक्सपीरियंस के नीचे, जहां पर हम लोग स्किल सेट्स डालेंगे. स्किल सेट्स में आपको क्या आता है? So you have knowledge about MS Word, Excel, PowerPoint creation, nowadays working on any AI tool. So let's say if you have gone ahead and done the course on contract management, LeDroit ka, in that scenario, you can mention worked on this tool. You can mention the name of the tool, or if you have drafted contract. So whatever skills you have to mention that in your skills area. Okay. Next, below skills, lastly, you have to mention your hobbies if you have any. Okay, mention the hobbies, or any other participation that you have done in your law college. So whether you have participated in moot court or fashion show or any other MUN, any other competition you have done, mention that in brief, a very short brief in pointers. Okay, if you have won any match, or whether you are a district level player of any particular sports, mention that as well. These things count. Extracurricular activities count. खाली पढ़ रहे नहीं मैटर करता. आप पढ़ाई के अलावा क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है. दैट शोज व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, वेदर यू आर एक्टिव और नॉट. सो इफ यू आर करेंटली इन लॉ स्कूल, try to participate in as many opportunities you can, because that will increase your experience. You will get a chance to interact with people, do networking. So try to participate for moot courts. Mostly what I experience in my law college, I was the person who was participating in everything. I have participated in moot courts and everything. So एक होता है ना फाइनल ईयर में आपको मैंडेटरी मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है. When that time arrived, people who didn't participate in any moot courts throughout the period of 5 years, they were very much scared about it. They did not know how to do it. And अब आपको points मिलेंगे how you are presenting yourself in moot courts, correct? So I had that experience throughout my law college. I did participate in several competitions. आप जीतो नहीं जीतो फर्क नहीं पड़ता. Whether you have participated on it or not, that matters. So get experience, mention the experiences on your CV to show that you are more than just a book. You have got several other experience as well. Because companies while hiring, they just don't focus आपने क्या achieve किया है. They are also going to focus whether you'll be able to communicate with other people or not. आपको क्योंकि क्लाइंट के साथ भी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है. They'll see that whether you have good communication skills or not, good presentation skills or not. So it's just not limited to what you are in your CV, the skill sets, how you are as a person. आपको बात करनी आती है या नहीं वो भी देखा जाता है. Okay, so there are people who, like, even when we conduct interviews, we come across people who talk it very slowly, very lightly. Don't do that. आधे टाइम अगर आप बहुत स्लोली बात कर रहे हो ना, सामने वाला छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा. तो थोड़ा एंथुसियाज्म दिखाओ, एनर्जी दिखाओ, दैट यू आर ईगर फॉर द अपॉर्चुनिटी, यू आर वेरी मच एक्टिव पर्सन. ओके, सो दैट वे इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन कि आप टीम के साथ काम कर सकते हो, आप प्रिजर्व रहने वाले पर्सन नहीं हो. आई नो देर आर पर्सनैलिटीज, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट. Okay, but try to showcase that you're more than just your resume. All right. So we covered extracurricular activities, courses, and workshops, and that's all. That's how your CV should look like. If you want, you can also add a picture on the top left hand side of your CV. Your short picture. With picture, I don't mean a selfie. You can add a short professional picture of yours. Okay, just to give an idea how you look like as a person. That showcase like what type of person they are going to contact. ओके, बिकॉज सीवी देखकर यू कैन नॉट मेक एन आइडिया कि इंसान दिखता कैसा होगा, इसकी एज कितनी होगी. सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग दैट, इट इज गिविंग अ गुड आइडिया कि आप दिखते कैसे हो. सो लास्ट कॉलम पे जहाँ पे हम हॉबीज मेंशन कर रहे हैं, ओवर देयर यू कैन ऑल्सो मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, करेंट लोकेशन, एंड देन योर हॉबी, एंड दैट्स ऑल. दैट्स overall your CV. Okay, can we move ahead with the like how to apply for opportunities now? Any questions on this? Okay. You have banking job experience, gap in CV. Okay. So make sure you mention your judiciary experience as well.
कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है. आप अगर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू काउंट. आप काफी पढ़े हो, यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, सो मेंशन दैट ऑन योर सीवी कि व्हाट यू वर डूइंग. लेट्स से you were studying in your law college till 2020, you graduated. After 2020, for 3 years you prepared for judiciary, so you must have given several examinations. Like judiciary के जितने stages होते हैं, आप जिस stage तक गए उतना आप मेंशन करो, कितने टाइम तक आप प्रिपेयर किए वो मेंशन करो, दैट्स ऑल. देन दैट विल काउंट एज एन एक्सपीरियंस. एंड ये सब जो होते हैं ना experiences, they matter because it's not an easy task. That counts because you learned a lot of things, you read a lot of books, so that is going to count, so do mention it. Okay, so that if a question pops up कि आप तो 2020 में graduate कर लिए, then why you are applying for the opportunity now, so you can say that clearly, that in between this time you were preparing for judiciary, you gave several entrance tests and preliminary and all these things you have given. And what other skills apart from this, maybe you provided several teaching, or if you have done any banking job, mention that as well on your CV. Make your experiences count. If you don't have any other experience, जो भी experience है आपके पास, make it count. Okay, now let's understand आपको भेजना कैसे होता है. So do you know first step क्या होता है? दो तरह से आप अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करते हो. वन, बाय सेंडिंग अ मेल. By sending a mail, you apply for opportunities. Second is by applying through a platform, that is your Naukri, LinkedIn, right? Naukri, LinkedIn से you apply for these opportunities. So how to do it? Let's understand first with जब आप mail पे भेजते हो अपना resume, how to do it. Now, I'll just quickly show you how do we receive. One second, okay. Yeah, I hope my screen is visible. So we received a lot of applications for internship, and you can see, like if I'll just switch to pages altogether, there will be several applications you'll just come across. All these are applications for internship. Now as an employer, if I have to look into this, how I'll be paying attention, itne sare CV hai, itne sare applications hai, how to get my attention. Same happens with the company, right? They get a lot of opportunities, like a lot of applications like this. How to give proper attention to it. Now, जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करते हो, whatever opportunity you apply for, first thing is notice how they have mentioned how you should be applying for that opportunity. Focus on the skills, like focus on the instructions. So when you come across any opportunity, they nowadays they'll mention, while applying for the opportunity, use this subject line, attach your CV, if required attach a sample video or attach a sample article as well. अगर ये रिक्वायरमेंट थी एम्प्लॉयर की और आई एम नॉट fulfilling that, how is he going to pay attention to my profile? If let's say he mentioned there was an opportunity for legal content writer for the month of September 2025. Okay, he required that my subject line should be legal content writer September 2025. This is the requirement. Okay, when I'm applying for the opportunity, I should mention this as my subject line. Next is, he also wanted me to attach a sample article. Now he wanted me to attach a sample article and I failed to attach it. He's not going to pay attention to my CV at all, because first thing is I didn't read the instructions properly. So employers are going to see how much serious you are about applying for the opportunity. आप सही से पढ़ रहे हो या आप directly अपना CV चार जगह डाल दे रहे हो. They are going to notice all these things. Second is what many people do. BCC या CCC में रखकर ना आप 500 एप्लीकेशंस भेज देते हो, 500 कंपनीज को एप्लीकेशन भेज देते हो. Even that is noticed. Kaise? When I'll open a mail, I'll notice whether you have sent that mail just to me, or whether you have I have been kept on CC या BCC में रख के आपने mail भेज दिया है. So that is also I'm going to notice. That way it will create an impression you are just randomly applying for opportunities. You are not serious about this opportunity. आप बस हर जगह apply कर दे रहे हो. So that creates an impression. Okay, so these are the things you have to work on. Next is cover letter. What is cover letter? Directly mail भेजना is very unprofessional. Directly call करके job के लिए पूछना unprofessional. Don't do this.
व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉर्चुनिटी के लिए पूछना, अनप्रोफेशनल, डोंट डू दिस। एक एक एक्शन आपका काउंट कर रहा है, आप कॉल पे नहीं पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नहीं कर सकते हो till the time they have reached out to you saying that we have got this opportunity, HR ने आपको कॉल किया है and opportunity के लिए बोला है, and then you are talking to HR about the opportunity, that way it is fine. But आप डायरेक्टली कंपनी में कॉल करके पूछ रहे हो, हाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्या, मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा दैट देयर इज एन ओपनिंग, आई हैव डन दिस थिंग, डू यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट थिंग इज रिजेक्ट, नहीं देखना। रीजन इज आप प्रोफेशनल मेथड से नहीं आए, आप कॉल करके आए, डू यू थिंक आई एम गोइंग टू पे अटेंशन टू यू इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग माई टाइम। आपने मुझे इतना विल्ला इंसान समझा कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक योर कॉल्स एंड एक्सप्लेन यू अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी। कोई ऐसा नहीं करेगा। हर कंपनी का रोल होता है पैसे कमाना, देयर फोकस इज टू अर्न मनी और गेट द बिजनेस डन। दे आर नॉट ओवर हियर टू गिव यू, अगर आपको अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है, डू इट विद द प्रॉपर मैनर, apply on the portal. If your CV is shortlisted, then you're going to receive a call. That is the method. Okay, so don't call or do anything. अब आप मेल पे अप्लाई कैसे करते हो? मेल पे अप्लाई करने के लिए यू शुड हैव अ कवर लेटर। डायरेक्टली रेज्यूमे अटैच करके नहीं भेजना है, यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर मैनर। व्हाट इज कवर लेटर? कवर लेटर इज योर ब्रीफ introduction about what you have done, why you are applying for this role. That is your cover letter. I'll just share a link with you over here. We have explained about cover letter and we have also shared samples of cover letter कि आपका cover letter दिखना कैसे चाहिए। सो फर्स्ट इज आप मेल की सब्जेक्ट लाइन पे फोकस करोगे, राइट, कि जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, हाउ टू मेंशन इट। अगर एम्प्लॉयर ने इंस्ट्रक्ट किया है कि ये सब्जेक्ट लाइन यूज करना, यूज दैट सब्जेक्ट लाइन। और अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो यूज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन फॉर द position of contract analyst, this should be your subject line on your mail. Then below that your mail subject should be this, in this manner. Okay, so I'll just share the link after this live chat, like this particular session. आप इस link पे जाके cover letter का sample and all check कर सकते हो। I've just shared the link with you all. Let me see if I can pin it up for you. Yeah, I've just pinned it. Isme, in this particular link, you will be finding sample cover letter as well, like how your cover letter should look like. There are two cover letters that have been attached. This is one and this is two. So you can draft. So the purpose of cover letter is to give an idea, like what you have done, why you're applying for this opportunity. So you can simply provide respect to the employer, respected sir, ma'am, then mention about your details, like I'm a recent law graduate from Balaji Law College or any other university you have done. Then mention about I have got prior experience of this. You have to mention that. Okay, so mention it in this manner. This is how you apply it on your this thing mail. Another thing is you have to give a, like let's say आपने 6 दिन पहले अप्लाई किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, फॉलो अप मेल भेजना। In a very kind words, drop a follow up mail like requesting like is there any update or not, so that इतनी सारी एप्लीकेशंस में आपकी एप्लीकेशन वापस से ऊपर आए, पता चले कि आपने अप्लाई किया है। फॉलो अप मेल भी 2 बार से ज्यादा मत डालना कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, दे आर नॉट योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ओके, 2 बार बस, अगर नहीं रिप्लाई आया कंसिडर दैट यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड, दैट्स ऑल, बट इससे ज्यादा नहीं। आर वी क्लियर विथ हाउ टू अप्लाई वाया मेल? नेक्स्ट इज your Naukri and LinkedIn profile. This is the best part, your Naukri and LinkedIn. यहाँ पे आप मेल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे employers are the one who are looking out for employee and they receive application in tons. Literally इतने सारे applications होते हैं ना that it's not possible for them to search. But what they do, how they do it, आपको कुछ भी search करना होता है, आप क्या करते हो? आपको सर्च करना होता है, आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, राइट। इफ योर रिक्वायरमेंट इज लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कोर्स, आप गूगल पे जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कोर्स सर्च करोगे, गूगल के पास जो सजेशंस होंगे अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करोगे, राइट। सेम हैपेंस विथ योर लिंक्डइन एंड नौकरी प्रोफाइल्स। आपकी तरह कई सारे लोग हैं जो इन प्रोफाइल्स में है, नौकरी एंड लिंक्डइन एंड सेवरल अदर प्लेटफॉर्म्स, इंडीड and several other platforms, right? So what they do, they search with the keywords only.
like the way you had your requirement about contract drafting course, similarly, if the employer requirement is contract drafting, a person who has knowledge about contract drafting, what he is going to do, he is going to look for a person who has knowledge about contract drafting. So what he is going to do, he is also going to visit Naukri, वहां पे search bar में he is going to search words contract drafting, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग है. अब जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आती होगी, देयर प्रोफाइल्स विल बी लाइक अपियरिंग ऑन द लिस्ट, राइट. अब अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे ये वर्ड्स ही नहीं यूज किए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड ऑल, इफ यू हैवंट यूज दीज वर्ड्स ऑन योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल कहाँ से आएगी ऊपर? It's not going to showcase, because in platforms, we all know ये technology है, ये tool है, AI and all, how they work on the keywords. आप keywords जो use करोगे अपनी प्रोफाइल पे, वही keywords के basis पे तो आपकी प्रोफाइल showcase होगी. So what you have to do first is आपको keywords correct use करने हैं. Now let me see with, yeah. So when you'll visit your Naukri profile, or even if it's your LinkedIn profile में आपकी bio में आप अपने keywords use करोगे. Keywords क्या कि आपने क्या काम किया है, what are your specialty, okay? And in your Naukri profile you will have option of keywords, आपको दिख जाएगा edit profile पे जाकर. So वहाँ पे you'll mention this is a sample of a software engineer. So his skills are in Java, core Java and all. Similarly, as a lawyer, आपको जिस चीज में एक्सपीरियंस एंड द टाइप ऑफ रोल यू आर लुकिंग आउट फॉर, यू विल मेंशन दैट. सो यू विल मेंशन contract drafting, contract review, contract negotiation, NDA, MSA, or if you are looking out for litigation profile, you are going to mention legal notice, legal compliance, then similarly legal research. All these skills will be mentioned. Okay, next is you have to keep yourself active on these areas. You have to stay active. So frequently open your account. आपको जॉब आए नहीं आए, आप अकाउंट एक बार ओपन करो, वहां पे एक्टिव हो वो, that will showcase. So over here in the example you can see active in 6 months. It is giving an idea to the employer whether you are actively looking out for an employment right now or not. So keep frequently open these applications to show that you are currently looking out for job. अगर किसी ने 6 महीने से ओपन ही नहीं किया, that means this person is not looking out for any job switch, job change जो नहीं देख रहा है, so they are not going to reach out to them. Okay, so अगर आप actively ढूंढ रहे हो opportunity, don't be just like you have applied it and उसके बाद आप ऐप ओपन ही नहीं किए. Keep on checking new opportunities क्या है and apply करते रहो. Stay active on these profiles. All right. Now, this is how you have to mention your details on this particular thing, roles and responsibilities, job description, jo bhi hai, accordingly. Like you can see, drafting and vetting of commercial agreements, drafting of legal notice and all. Use the same keywords on your profile, same on your LinkedIn profile as well. Okay. So, yeah, so that's all with regard to the how to apply for these opportunities. You have to keep it updated on your Naukri profile. So this is the filter level for the employer. They can customize it. They can see from here. They can mention the keywords and they can filter out people who were, active in past 15 days, or people who are currently serving the notice period, and accordingly they will see. Make sure that you have added an image to your Naukri profile and your this thing. See over here, this person keywords are appearing on his profile, whatever keywords he has used. So if I have requirement of person having knowledge of Java, I can see directly on his profile Java. This is just one of the profile. Below this you can see similar CVs 100. So there are several other CVs as well. I'll simply just scroll through, and jiski profile अच्छी लगेगी, whoever profile is good and matching with the things, I'll click on that profile and then I'll open it. Then I'll reach out to your CV. So first is you're creating an impression by mentioning the keywords and keeping your profile updated, and by staying active on these platforms. Okay, so this is how you have to keep your Naukri profile, keep your updated resume and everything. Next is your LinkedIn. Of LinkedIn pay, some people just keep on posting unnecessarily. They keep on posting. Don't do that. Post value content. अगर आपने कोई internship की, post about it.
You have done a course, post about it. If you have written an article, post about it. Unnecessarily बैठ के खाली post share कर रहे Instagram, Facebook की तरह, don't do it. Post value things and connect with valued people. Don't just connect with everyone, connect with limited people who are from your same field so that you can create networking in these platforms as well. Okay, so these were the pointers. I hope this session was helpful for you all. If you guys have any doubt, now we are open for this thing Q&A session. You guys can ask your questions. Feel free to ask all your queries now. um, we'll just give it a look. Whatever doubt you have, whatever query you have, feel free to ask. Was this session helpful? Did you guys learn something? Have you gotten a certain clarity about things now, like maybe what step you were doing wrong and how things were so far? Can I have any reaction from your end? You can also subscribe to our channel. We go live frequently and we do conduct several sessions. So there's a series of understanding contracts used in various industries where we covered several contracts from real estate, IT sector and all. It's good for knowledge. You can check out our other like YouTube videos as well. Okay, so I hope you all are there in LeDroit WhatsApp group. Over there we keep on sharing about our courses and other stuff. You can get connected with us over there. If you like the session or want to enhance your skills, you can go ahead and do the courses as well. Okay, so do let me know if you have any query. If you guys don't have any query, we can wind up the session then. Okay, all right then. Thank you so much for joining. I really hope the session was helpful. You guys enjoyed. If you did, then do like, subscribe, and share the particular session, so that others can also benefit from the same. Hoping to see you all in our next sessions as well. Stay connected with LeDroit India. Thank you so much for joining. Bye everyone. Thank you.